Hello students, in previous video we have completed chapter 12 and that is the last chapter of the book. So now we will start the revision, and as you know that 4 chapters are coming in the exams, 9th, 10th, 11th and 12th. So today we will start the revision of lesson number 9, that is fuels. And in this chapter we have learnt about the types of fuel, their uses. So let us revise them. So first of all, what is a fuel? A substance that produces energy on burning is called a fuel. So ऐसा कोई substance जो burn होने पे energy produce करता है, that is called a fuel. And we have different types of fuels, that is solid, liquid and gaseous, right? These are the 3 forms of fuels. So examples of solid fuels are wood, coal, coke and cow dung cakes. So जब हम इनको burn करते हैं तो इससे हमें energy मिलती है. And similarly liquids fuels are kerosene, petrol and diesel. These are the examples of liquid fuels. And gaseous fuels are LPG, compressed natural gas, CNG and PNG, that is piped natural gas. And biogas are examples of gaseous fuels. So ये 3 forms में हमको fuels मिलता है, होता है, and these are the examples. So solid, you know these 3 forms: solid form, liquid form and gaseous form. And then the uses of fuel. What are the uses of fuels? So we know that fuels produce energy on burning. जब fuel जलता है तो उससे क्या होता है? Energy produce होती है. You can see here, this is a solid fuel. Wood is burning and it produces heat and light energy, right? इससे heat energy भी मिल रही है जिससे कि food cook होता है, and light energy also. And then you can see here liquid fuel, petrol, and vehicles run with these liquid fuels. And gaseous fuel, LPG cylinder. So this is also used as a domestic fuel, and इसको यूज करके हम अपना फूड जो है वो कुक करते हैं, right? So energy is required for many purposes. We need energy for cooking, for movement of trains, automobiles and aeroplanes, and also for generating electricity, for running various machines and so on. So fuel हमें हर जगह चाहिए जहाँ भी हमें कोई वर्क करना है. This you can see here: cooking, movement of automobiles and electricity generate करने के लिए, और जो भी हमारी मशीन से उन सबको रन करने के लिए. So for getting energy we use different types of fuels in different situations. तो same fuel हमारा हर जगह तो यूज नहीं हो सकता. So we use different types of fuels in different situations. According to the situation, जो है हम fuel को select करके और उसको use करते हैं. Now, first of all, domestic fuels. Domestic fuel, that means ऐसे fuels जो घर में use करते हैं हम, और food cook करने के लिए, right? Cooking के लिए use करते हैं जो हम. So in early ages, man discovered fire and learned cooking. At that time it was wood that was mainly used as a fuel. So you know, पहले के टाइम में wood को ही हम यूज करते थे फूड कुक करने के लिए, कुकिंग के लिए. एंड nowadays you can see in villages कि अभी भी बहुत सारे villages में जो wood है उसको यूज किया जाता है. चूल्हा बनाया जाता, चूल्हे में फूड कुक होता है. एंड later cow dung cakes, coals and kerosene also started getting used as domestic fuel, and these fuels are used even now in some households. So it is
gaseous fuels like LPG, PNG and biogas that are now commonly used in as domestic fuels. तो आपके घर में भी यही आपको देखने को मिलते हैं like LPG cylinders, right? And विलेजेस में आपको बायोगैस भी देखने को मिल जाते हैं. So these are cleaner fuels. Why cleaner fuels? Why LPG, PNG and biogas are called cleaner fuels? Because they do not produce smoke on burning and do not leave any ash after burning. So जैसा आप जानते हैं बाकी फ्यूल्स जब बर्न होते हैं लाइक वुड, काउडंग, केक, कोल एंड केरोसिन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्मोक, राइट. और वुड से और काउडंग, केक से, कोल से, इनसे तो ऐश भी बाद में बच जाता है. सो that is why they are not cleaner fuels. And in case of LPG, PNG and biogas, smoke जो है वो produce नहीं होता है, right? Do not produce smoke on burning, and secondly they also do not leave any ash after burning. So that's why these are called cleaner fuels. These cleaner fuels are convenient to use and are more efficient. They are also more eco-friendly. जब वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या वो ज़्यादा इको फ्रेंडली हो गए, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे. एंड देन द फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो यू ऑल नो कि हमारे घर में जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब किससे चलते हैं? फ्यूल से चलते हैं. इफ यू हैव cars or bikes, scooties, so they all run on petrols or diesel. So trains were earlier run with the help of steam engines. In these engines, steam was produced by burning coal. And nowadays, train engines use either electricity or diesel. और आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से ट्रेन्स चलती हैं. So vehicles like buses, cars and scooters run on petrol or diesel. And aeroplanes commonly use a highly refined kerosene-based fuel known as aviation turbine fuel, ATF. So ये Phillips में भी ये question, highly refined kerosene-based fuel, right? Aeroplanes में क्या डलता है, क्या use होता है? Highly refined kerosene-based fuel, and it is known as ATF, that is aviation turbine fuel. And buses, auto rickshaw and cars now prefer to use CNG as their fuel. Why? This is because CNG powered vehicles have lower maintenance costs and better efficiency. Also, CNG is a better green fuel. Why it is also known as green fuel? Because it causes less air pollution. जैसे हमारे LPG, PNG एंड बायोगैस स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो ये इस तरह से ये भी आपका पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम करता है एंड इज मोर इको फ्रेंडली एंड कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. सो जब स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि पोल्यूट नहीं होगा, और पोल्यूशन नहीं होगा तो आपकी हमारी जो हेल्थ है और को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा, राइट. एंड these are the fuels that used for running the vehicles, aeroplanes, automobiles, right? And then fuel for generating electricity. So in powerhouses, coal is used to generate electricity, right? So powerhouses often burn coal to convert water into steam. जो वाटर है उसको स्टीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको बॉयल करके. और बॉयल कैसे होगा? जब हम कोई फ्यूल यूज करेंगे. सो देयर एंड पावर हाउसेज व्हाट इज यूज्ड? कोल. एंड दिस स्टीम इज यूज्ड टू ऑपरेट टर्बाइन्स व्हिच इन टर्न हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. कोल कन्वर्ट water into steam, and this steam energy used to operate turbines. Turbines को rotate करने में help करता है the steam energy, and which in turn help to generate electricity.
And this method of generating electricity is not eco-friendly. Why? Because coal produces smokes and harmful gases. So it is not eco-friendly, and it also leaves ash after burning. So it is being gradually given up. Nowadays, other better and more eco-friendly methods are now being used for generating electricity. For example, with the help of wind energy or solar energy, and electricity is also generated by water, that is through डैम्स, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. सो जो एनर्जी स्टोर होती है वाटर में, डैम्स में, जो ऊपर से पानी जब हम गिराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सिमिलरली विंड एनर्जी एंड सन एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, एंड दैट इज द बेटर ऑप्शन. So in next video we will revise more about this chapter. Thank you.